energy and the positivity. Oh, Yes. Chandrama. Yes, Chandrakor. exactly, Oh, exactly. nice. Jai Mata Di. I kind of meditated upon who I want to speak to, for which Devi. I just got up and I decided कि this is not me. It Lot just of power, reminds you how powerful you are. मैं इतनी negative कैसे हो सकती हूँ? hitting or on the verge of depression. गरबा करती हूँ तो बिल्कुल खो ही जाती खो हूँ. जाती So हूँ. yeah. That one day I woke up and I was bleeding. Bleeding as in you do for your relationships. Yes. I also do for my work. And doctor had said कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल रह पाएंगे. उनको बफेलो डिमन भी कहते हैं. वो अपना रूप बदल लेते थे बार-बार, भैंसे के रूप में आ जाते थे. So she was in a way fighting her own battle from her own body. जिसमें हम देवियाँ थी और हम महिषासुर का वध कर रही हैं. So, Namaste everyone. Happy Navratri, Shubh Navratri to all of you. First of all, thank you so much for watching so many videos that we made. I hope आप सबकी नवरात्रि बहुत ही अच्छी, बहुत ही blessed तरीके से गुजर रही है. Today we are celebrating 6th day, which is dedicated to goddess Katyayani. कात्यायनी देवी जो है वो है छठा फॉर्म है माँ दुर्गा का, और वो इसीलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, और इसीलिए वो महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई जाती हैं. But before we start, I want to introduce Apurva, and I'm very excited to discuss with her this day because she was the one who came to my mind when I thought about Ma Durga killing Mahishasura, and probably you will get to know a bit about it, that why I chose to interview her or talk to her on this day. I want you to tell everybody a little bit about yourself. Give a small introduction, who you are, what do you do? First of all, thank you very much for having me here. When you talked to me about this already, I felt, the form in me. So Indeed. that came to me as a surprise. But here we are. So about myself, my name is Apurva Parkhe, and I am professionally an IT engineer, and I have another profession and many hobbies which I follow. Since 5 years, I'm here in the Netherlands. Second profession of mine is a life coach. I help people get freedom from anxiety. I have been quite active in last 2-3 years because of course of the COVID situation. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी problems हुई, और the most effective thing was I was able to help them. So you are already the killer of the fears and kind of so many complexes that people developed. So this was one of the reasons, because I knew who she is, and I think that's very explicit reason that why I wanted to talk to you on this particular day. And with that, I am quite active in many aspects of life. For example, I am a dancer and a choreographer. Yes. I have Bollywood in my blood since I was a child, but then I explored some more dance forms like hip hop, like contemporary. Wow. Like ballet. I'm going to learn ballet now. Can you show your tattoo in the camera? Yeah, sure. I've started my first ballet lesson last week. Okay, yes. Nice. So hopefully I'll be a ballerina next year. So you're a student as well as a teacher. Learning never stops anyway, right? Indeed, indeed. Here in the Netherlands, I'm part of also Ganesh Mahotsav, which we celebrate here. I throw all my energy in welcoming Ganesha and celebrating every bit of it here. These are some things I love to do. It's already a great opportunity that I'm able to share all this here with you. So I really want to thank you for saying yes and trusting me for doing this. And I'm already excited to hear more from her. What does Navratri mean to you? जब Navratri word आता है तो क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? जब
नवरात्रि वर्ड आता है तो हाँ हाँ बहुत सारा सेलिब्रेशन और हाँ हैप्पीनेस आती है राइट हाँ 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 मन में, और बहुत सारी एनर्जी आती है, लाइक यू कॉल शक्ति, जब देवी हाँ को याद करते हैं. So Navratri is more about happiness inside out and a lot of power lot of inside power. out. Okay, Inside out. yes. Yeah, गरबा एक गरबा जब हम करते हैं and yeah, the whole environment becomes so special, so gracious, so beautiful, कि वो मेरे मन में रह जाता है. रह जाता है. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ नवरात्रि का नाम तो सबसे पहले गरबा दिमाग में आता है? बोल सकते हैं, बिल्कुल. मेरे लिए तो बिल्कुल गरबा. बिल्कुल, because dance is very close to my heart and so मैं जब गरबा करती हूँ तो बिल्कुल खो ही जाती हूँ. So yeah, it's very special. तो जब देवी सुनते हो, ये हो गया नवरात्रि फेस्टिवल, बट जब देवी सुनते हो तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? कैसी इमेज दिमाग में आती है देवी की? कैसा लगता है, मतलब व्हाट इज देवी अकॉर्डिंग टू यू? राइट. सो मेरे लिए देवी इज all about, I feel a ray of light. जब मैं देवी को स्मरण करती हूँ या याद करती हूँ तो a light coming from somewhere on me and on all of us, जिससे I get energy and it just radiates from me outside. So that light comes to me. Do you do and meditation? just yes, absolutely. I thought so. Okay. Absolutely, every day. So I make time for You that. make time for it. Yes, I make time for it. Because this is also one of the techniques in meditation, that how do you meditate? You actually focus your attention on a ray of light and imagine that's falling on you, it's falling on your environment, everything is becoming peaceful. Indeed. Right? So it's also like meditation you do not for only for yourself, but it has effects on everyone around you. You do for your relationships. Yes. I also do for my work. You do for your day-to-day life, everything. Yes. And it can affect even a stranger. Yes, it does. Indeed. Correct. Indeed. The aura is always, you are always surrounded by the aura. Absolutely. And the more positive it is, any person who passes by can feel it. Yes, absolutely. Absolutely. Lovely. So that is the meaning of Devi. ऐसी कोई स्टोरी है देवी की जो मतलब कभी किसी ने, मम्मी ने, दादी, दादा, नाना, किसी ने भी सुनाई हो एंड इट स्टेड विद यू? अभी भी जैसे कोई कहते हैं ना गणेश जी, तो मेरे दिमाग में वो सीन आता है जब भगवान शिव जी उनका काट रहे होते हैं मस्तक, तो एकदम सबसे पहले अगर बोलो गणेश जी, सबसे पहले वही आता है मेरे दिमाग में. तो ऐसे देवी से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी? कोइंसिडेंटली यही स्टोरी है जिसमें वो महिषासुर का वध करती है, एंड दैट हैड ऑलवेज स्टेड विद मी इन सम वे और द अदर. एंड देयर वाज वन चांस कि मैंने तब कंटेम्पररी डांस फॉर्म सीखा था. अच्छा. और I don't know how it came together, but हमने ये पूरा डांस डिपिक्ट किया था जिसमें हम देवियां थी और हम महिषासुर का वध कर रही हैं. So that picture stayed with it. Just watching that gives a lot of power, and it just reminds you how powerful you are. Absolutely. And sometimes it's easy to forget how powerful we are, what things we can do. So I think, like Apurva rightly said, so Navratri, I think you have put it beautifully. Navratri is a very good reminder to yourself that how powerful we are, that we tend to easily forget in our lives. Absolutely. Amazing. So I think Navratri, everybody should work on the things which bring a lot of power, positivity to you. Focus your time more on those kind of things. कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हो एंड यू फेल्ट प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन पावर? तुम्हें लगे कि यार ये तो मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली प्रोटेक्टेड. ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में से लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं. कभी ऐसा कुछ हुआ है? हुआ है. वुड यू लाइक टू शेयर? Yes, I can share. It still brings me goosebumps. But yes, so it was Corona time, beginning of Corona time, and 6 months हुए थे. तो मुझे लगता था कि I am an extrovert person and
I get energy from people. From people, yeah. So which is still true. बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी डबल होती है वहां जाके. मुझे बहुत पसंद है लोगों से मिलना, लोगों के साथ चीजें ऑर्गेनाइज करना, मीटअप्स करना. बट कोरोना के टाइम पे मुझे अकेले घर पे बैठना पड़ा, जैसे हम सबको बैठना पड़ा, राइट. सो देन it was like question on my belief. मेरा बिलीफ क्वेश्चन हुआ वहां पे कि I figured out कि मैं बाहर इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे लोगों से मिलना पसंद है, बल्कि इसलिए जाती हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं बैठ सकती. And I think it's a reality check, है ना? It was a reality check for me. And I hit the ground at that point of time क्योंकि वो एक ऐसी बिलीफ थी जिसको मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था. And I went into a lot of pain and anxiety during that period of time. बहुत और सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इट वाज डिफिकल्ट टू इवन कनेक्ट. एंड यू नो, न्यूज़ इंडिया से आ रही थी, एग्जैक्टली, फैमिलीज में कोई ना कोई परेशानी चल रही थी. मैं यहाँ थी, मेरी फैमिली वहाँ थी, मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी. सो आई हैड अ लॉट ऑफ एंग्शियस फीलिंग. तब मुझे आई थिंक दैट वाज माय डीप एंजाइटी व्हिच वाज गोइंग ऑन, एंड फियर कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी, क्योंकि मैं तो अकेले बैठ ही नहीं पा रही. My thoughts would go negative, everything negative. That one day I woke up and I was bleeding. I was bleeding. My nose was bleeding. I was bleeding without my periods. And it was shocking for me कि मेरा ये ब्लड ये कैसे हो रहा है. एंड मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लग गए थे. एंड उस दिन ऐसा लगा कि मैंने वापस रिकॉल किया कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, मैं इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि your body is like just weeping. My body was weeping, not only me, and it was very shocking. So उस दिन कहाँ से दिमाग में आया या कहाँ से पावर आई मुझे पता नहीं. I just got up and I decided कि this is not me, and I have to change this. The same day. Okay. I have to change this, and if I will be like this, how will I help other people? So I have to change it. I don't know how. And then मैं बस गूगल ही करती रही कि मैं इसको चेंज कैसे करूं. एंड लकीली मेरे पास एक बुक थी तब टोनी रॉबिन्स की, which says awaken the giant within. Oh, you had this book already with you? I had this book. But you never read it before? I never read it before. आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे और वो रह गई. And that day I felt that मुझे ये डिवाइन पावर आया है, एंड कि मुझे इतनी सद्बुद्धि आई कि मैं वो उस बुक को उठाऊं और मैं पढूं. एंड I have to do it for myself. I need to take care of myself because I just can't have my body weeping like this. Okay. So I would here like to tell everybody that Apurva lives by her own here. Yes. And ऐसे situation में अपने आप को पाना wherein you are actually hitting or on the verge of depression, and then to bring yourself back, इतनी शक्ति अंदर आई that you felt that it was a divine work. Otherwise, I can imagine if a person is living alone and goes into this kind of depression, it's no way that you can come out without any help. No. Right? And it was so worse that your body was showing the symptoms. It was not just mental, but it has affected so much. Yes. My God. That I've never imagined. Wow. And उस दिन मुझे लगा कि कहीं से तो ये पावर आया, and it's all divine that I was able to get up, do something for myself. And I think in 2 to 3 days, I just made a routine for me. So I started with my basic ritual of getting up, drinking more water, taking care of myself, eat healthy,
मैंने ऐसा टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे सोचने का टाइम ही ना मिले कि मुझे क्या करना है. Wow. Okay. And I did that And you for, followed that. yes, That is a big thing. I had to, I had no willpower, options. because I am also kind of a person who likes to be disciplined. लेकिन Yes, कहीं ना कहीं चूक हो हो जाती जा है. वो exactly, विल पावर कंसिस्टेंट रखना, exactly. I think It it's was very tough, no doubt. But I had to do it because I had to change. I had to make that change, and I think I continued that for 25 days, yeah. and I started feeling better. I just felt like I'm Wow. coming back to normal. I hope that nobody goes through this. It's Yes, very painful. absolutely. But still, if you're trying to make a routine and if you're also struggling, to improve your life, I think it's a good book. And she has suggested that book to me as well, and I'm already reading that, by the way. Thank you for sharing Thank the you. story out loud, and I think definitely it's gonna help people. And if you want to connect to Apurva, her website is www.yourfirstlifecoach.nl. yourfirstlifecoach.nl. She also gives life coaching now. And I think it's more valuable because you yourself have come out of it. Yes. So this was quite intense. Yeah, so Yeah. that is Shakti, right? So you can, you are the powerhouse of Shakti yourself. All it is about just knowing forget. that how to tap into your energy and how to invoke it by Very well yourself. said. Today is the 6th day of Devi, and Devi is called Devi Katyayani. I'll read out the story. You know the crux, but I'll read out the story to you. Yes. So as soon as you read the story, you have to tell me सबसे पहले कौन सा इंसान तुम्हारे दिमाग में आता है. ठीक है. So देवी कात्यायनी का मतलब है डॉटर ऑफ सेज कात्य. एक हमारे कात्य ऋषि थे, उनकी बेटी के रूप में इन्होंने अवतार लिया था. तो ये जो ऋषि कात्यायन थे, कात्यायन इज अ फुल नेम, इसलिए कात्यायनी, डॉटर ऑफ कात्यायन. तो ये देवी के, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े डिवोटी थे, एंड बहुत उन्होंने साल तपस्या करी. तो जब माँ दुर्गा उनकी तपस्या से खुश हो गई तो उन्होंने बोला कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना, कोई भी वरदान मांगो. तो उन्होंने बोला कि आई वांट यू टू बी बोर्न एज माय डॉटर. अच्छा. आई वांट देवी टू बी बोर्न एज माय डॉटर. तो शी अग्रीड टू इट. एंड ऑल्सो द अनदर रीजन वाज कि वो ऐसा समय था जब ऋषि मुनि बहुत वैसे बेचारे बड़े तंग थे सारे डीमंस के अत्याचार से. तो शी वाज बोर्न ऑल्सो उस फॉर्म में. शी प्रोटेक्टेड मेनी सेजेस एंड डेमी गॉड्स फ्रॉम द डीमंस. तो उसी अवतार में होता है कि ये महिषासुर उस टाइम पे बहुत टॉर्चर करता था लोगों को और जितने भी ऋषियों को, ऑल द 3 वर्ल्ड्स. और उसको एक वरदान प्राप्त था कि पहले तो उसने बड़ी तपस्या करी हुई थी, तो उसको ये वरदान, वो चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं. लेकिन भगवान जी ने कहा कि भाई ये तो है नहीं कि इफ यू आर बोर्न यू विल हैव टू गिव अप दिस बॉडी ना. तो उसने बोला कि उसने अपना दिमाग लगाया. उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं मरूं तो एक वुमन के हाथों मरूं. बिकॉज उसको इतना ईगो था अपने ऊपर कि उसको लगता था कि ये बड़े बड़े देवता तो मुझे मार नहीं सकते, एक बेचारी वुमन, एक स्त्री, एक महिला मुझे क्या मारेगी. तो उसको वरदान मिल गया तो बड़ा खुश हो गया, अब तो मैं तो अमर हो गया. जब महिषासुर का आतंक और बढ़ गया तो देन शी टुक द फॉर्म एंड शी स्लेड महिषासुर. सो महिषासुर को कहते हैं, उसको वो, उनको बफेलो डीमन भी कहते हैं. वो अपना रूप बदल लेता था बार बार, भैंसे के रूप में आ जाते थे. तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है कि माँ दुर्गा ने कैसे उनका वध किया. वो बार बार अपना रूप बदलता था, छल करता था, कपट करता था. सो वेरी ब्यूटीफुली शी स्लेड महिषासुर. तो बेसिकली और तब से इनका नाम महिषासुर मर्दिनी, जैसे मैंने पहले भी बोला, इनका नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया. एंड इवन टुडे ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्म में माँ दुर्गा शी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट इविल. शी इज. तो ये स्टोरी है देवी कात्यायनी की. और कहते हैं कि शी इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल. अब इसको अगर स्टोरी को समझना हो तो हम किसी भी फॉर्म में समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट अ पर्सन, सो यू कैन थिंक अबाउट अ पर्सन who is also like Devi Katyayani, who is constantly standing up against wrong things, a very bold person. It's not necessarily कि कोई woman हो, it can be a man, anybody can be a child, your guru, कोई भी. He constantly who raises the voice against evil, और जिस भी तरह you want to interpret this story.
So tell me, which person comes to your mind if you think of such a powerful character, है ना, who is delicate at the same time, but also when it comes to do the right things, that person is never will never take a back foot and not afraid, fearless. या इस स्टोरी से मुझे जो डायरेक्टली जो मुझे याद आए वो है मेरी दादी. दादी. मेरी दादी was she is no more अभी. अच्छा. But I have spent a lot of time with my दादी. और मैंने हमेशा उनको अपना ख्याल सबसे पहले रखते हुए देखा है. अच्छा. हाँ अपना जी. ख्याल मतलब अदरवाइज somebody would say कि वो अपना ख्याल सबसे बाद में रखती थी. हाँ तो हाँ. मे भी उनके उनके यंग टाइम में उन्होंने काफी दूसरों का ख्याल रखा होगा. आई थिंक मैं जब 3 या 4 साल की थी तब दादी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था. अच्छा. दैट वाज अ बिग थिंग उनके लिए गोइंग थ्रू दैट. एंड देन डॉक्टर हैड सेड कि ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल रह पाएंगे. ओके. बट she knew what her body needs. And she would never give up on taking care of herself. उनको हमें कभी नहीं बताना पड़ता था कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है या आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. और वो करवा लेती थी. अच्छा. बिल्कुल कि मुझे इस टाइम खाना खाना है, डंके की चोट पे. इस टाइम मुझे खाना खाना है मतलब मेरा खाना होना चाहिए. इस टाइम पे मेरी बॉडी को ये नीड है तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए. अच्छा. और वो इंजेक्शन वो उन्हें डायबिटीज भी थी. अच्छा. वो इंजेक्शन भी खुद के खुद ही लेती थी. अच्छा. उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं पसंद था उस चीज के लिए. तो वो अपने इंजेक्शन भी लेती थी. माय मॉम आल्सो ऑफ कोर्स हम सब साथ में रहते थे तो काफी उन्होंने भी ध्यान रखा. बट शी fought it and she still lived for 15 years after that. Wow. When the doctor said that she would live for 2 years, she lived for 15 years. She lived for 15 years. Amazing. After that. So it was like nobody could. She was like, you are no one to tell me how many years I'm going to live. I will take care of myself and I will do whatever is possible and I will live. So उनका जो विल पावर था, we have learned so much from her, of her willpower to live, to just know that not a disease cannot decide how much she can live. Amazing. She would do anything possible for taking care of herself, fighting it. So she was in a way fighting her own battle from her own body. From her own diseases. Indeed. Wow. Indeed. And then she would not rest, she would not stop. No. Amazing. I can just already imagine, how strong or an empowered woman she must be. Because हमारे कल्चर में कैसा है ना कि सबका ध्यान रखो, पहले सब खा लें, कुछ बचेगा तो मैं खा लूंगी, पहले ये कर लें, दूसरों को प्रायोरिटी हम ज्यादा देते हैं. And then we don't take care of our own bodies, है ना. And at that time she was so empowered and bold about it कि भाई मुझे ठीक होना है तो होना है, मैं करूंगी तो करूंगी. Lot of willpower. कि अगर कुछ ठान लिया तो बस ठान लिया. Wow. And when she died, she was really old, and then she had some complications because of diabetes and those things. But yeah, she lived her life to the fullest. Amazing. And yeah, I feel very proud of her. To be a granddaughter to her. Be her granddaughter. Yeah, wow. Indeed. So ideally, इसके बाद मैंने मेरा क्या format रहता है? If a person tells me, this person comes to my mind, so I tell the person to pick up a phone and give a call to the person and tell them. But unfortunately, we can't do this now. But we can pray that, of course, she must be having a great next life, and wherever she is now, in whatever form she is, again, powerful. And she would be. Definitely. Thank you. कभी कभी ऐसा टाइम आता होगा कि ऐसी एनर्जी चली गई, बहुत लो फील हो रहा है,
then what do you do to come back to a normal state? So what is it in daily life that brings your Shakti back to you? Right. Energy back or Shakti back is एकदम ऐसे कड़क कैसे हो जाती हो? Don't tell me चाय पी के. नहीं 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 so when I was going through anxiety हाँ. तब उस टाइम से मैंने एक मंत्र अच्छा. बना Chant करना शुरू करा था. chant तो नहीं but that is something that is a reminder to me always when I feel low और लगता है कि बस मतलब क्या ही हो रहा है अच्छा. life So you में. read yourself. So then It's kind of an affirmation. it's not an affirmation, it's a mantra, I will say. Focus on what is there in front of you rather than focusing on what's not there. जब भी मैं ये बोलती हूँ it immediately it brings my attention to the present moment, right? Present. And then I look around myself and I have every reason to be happy. Oh, lovely, beautiful. It's just that the reminder, यार. तो It's a reminder to तो self. कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं आता है याद ये, है ना? कभी आप इतने ड्रेन्ड रहते हो Drain हो जाते कि हैं, आपका हाँ, दिमाग नहीं याद नहीं दिलाता चलता ये. है, हाँ. तो इसलिए मैं इसको कहीं लिख के रख लेती हूँ. अच्छा. हाँ. तो ये मैंने Which is a very good tip. हाँ. या क्योंकि नहीं रहता है कभी याद. आप इतने ड्रेन रहते हो आपके Right. दिमाग में, एंड हमारा दिमाग भी ऐसा बना हुआ है कि वो नेगेटिविटी पे बिल्कुल सर्कल्स में घूमने लगता है. तो इसलिए मैं लिख लेती हूँ. तो मेरे बेडरूम में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि focus on your present rather than past or future. This helps me to regain and Normal state में आने से. Okay. Just coming to the present. जो मुश्किलें हैं उसके लिए तो हम प्लान बिल्कुल कर सकते हैं. But at present moment, I do have things what I want, and you will always be missing on something or the other. Always, right? That's fine. आज ये है तो ये नहीं है, वो नहीं है. आज इसने कुछ कह दिया, कल किसी और ने कुछ कह दिया. It's never ending process basically. Yes. And we tend to, अगर हमारा मन कमजोर होगा, हमारा दिमाग कमजोर होता है, we tend to slip into the negativity very easily. To stay positive, कहना आसान है, but इतना ही मुश्किल है. But I think with some rituals for yourself, if you understand your body well, I think you can definitely come out of it like Apurva said. Thank you so much. It was such a my pleasure. Power-packed and empowering, I think, episode. It is, in fact, and I hope anybody who is listening to it are able to connect and and continue being blessed with the grace of Devi and continue invoking the Devi in your lives. It's bringing us to an end, but before we end, we have a last thing. Yes. So, what is it that you do which makes you feel feminine? Nice, relaxed, flowing with energy. ऐसा क्या है? I think that is dance. Dance? In its absolute lovely being. It is dance. So we are going to do that now. You will tell me the steps and we both will do it together. Sure. And then we'll easy. आने दो दिल में आ जाने दो कहना मुस्कुराहट को go से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 love you zindagi love you zindagi love you zindagi wow.
what an energetic dance. मजा आ गया पूर्वा. Thank you. This is one of my favorite song as well. It was Amazing. so lovely. Thank you. Full on energy आ गई अभी वापस. मुझे भी, है but the ना? pleasure is all mine. हाँ. Thank you. छठा दिन है देवी कात्यायनी का, so I really want to end it by singing a bhajan Beautiful. to offer gratitude to Devi, to thank her uh, for all the good things that she has blessed us with. तो अगर माता रानी का भजन हो जाए तो चार चांद लग जाएंगे. Okay. So this is a bhajan. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया. जय माता दी. जय माता दी. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. जय माता दी. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. जय माता दी. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. जय माता दी. Thank you Thank so you. much. What a lovely conversation. I just thoroughly enjoyed it. Me too. Yes. And I'm really looking forward to the last 3 days of Navratri. And I hope you all enjoyed Yes. listening to Apurva and listening and watching this episode. Jai Mata Jai Di. Mata Di. Until we meet next time. Thank you. Thank you. Bye, 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 bye. Love you, Zindagi.